Yes. So first of all, welcome to today. Now, new batches of data analysis with Jane are starting. First, the batch mode will be online, offline, and hybrid, and we are going to cover all the essential tools so that you will get placed. Now, before starting this course, there is one important part which you must understand. So जब भी आप इस कोर्स को ज्वाइन करोगे तो एक होता है कि आप टूल्स सीख रहे हो यस वी आर गोइंग टू लर्न ऑल द टूल्स एसक्यूएल पाइथन पावर बीआई but problem is that only curving the tools will not help you in real world scenario. And let me show you why. So for this demonstration, we are going to use three libraries, Pandas, NumPy, and Cbon. And there is data of 500 Fortune companies which are having information about their revenue, their profit change, asset, and market. So you can see your data in front of you. Now, if you look at this data right now, you will not see any problem. But let me show you what is problem in this data set. So let's take revenue as a column, for example. Now I want to find out, we have total 500 companies, and I want to find out what is the total revenue generated by all this company. So answer is simple. I will go take this revenue column and will use sum function. There you go. Now in front of you, you can see that whatever answer is there, it is not correct. So what actually happened? So प्रॉब्लम इज दैट जब आप इस डेटा को देख रहे हो तो आपको एक क्लीन लग रहा है लेकिन यहाँ पे जो डॉलर साइन है दिस कॉमा और दिस परसेंटेज ये आपके लाइब्रेरीज को नहीं पता होता है सो अभी एडिशन करने की जगह उसने उसको अटैच कर दिया सो दिस इज द प्रॉब्लम नाउ लेट मी शो यू अनदर प्रॉब्लम सो लेट्स टेक प्रॉफिट चेंज फॉर दिस एग्जांपल वी हैव प्रॉफिट चेंज एंड आई वांट टू नो let me take the profit change first. And I want to know companies who are having negative profit change. So which is less than zero. When I run this code, you will get the error. Again, same problem. So as a data analyst, when you are going to work on any kind of data, first thing which you do is data cleaning. अगर आप data cleaning अच्छे से नहीं करोगे, you are going to face this problem. Let me show you how this problem will arise in creation of graph. So you have revenue change. Let's take that same column. And in revenue change, I want histogram. So I will copy this one. And to plot that histogram, I'm going to use C1. So this plot. And let's run this code. And again, you can see nothing is there. So actually, आपको graph तो दिख रहा है, but can you see the graph, whatever is there, it is not correct, right? And this is the biggest challenge you are going to face while working on a practical data set which are having those problems. So अभी जो आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो जैसे आपको पांडास है सीबॉन है नंपाई है ये आपने सब सीख लिया बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू एनालाइज दैट डेटा क्योंकि डेटा क्लीन ही नहीं है ठीक है एंड दैट्स व्हाई ऑलवेज से ओनली लर्निंग टूल्स विल नॉट गेट द जॉब आपको पता होना चाहिए प्रैक्टिकली इसको कैसे यूज करना ठीक है सो लेट मी शो यू आप इसको प्रैक्टिकली कैसे यूज करोगे सो प्रैक्टिकली यूज करने के लिए सबसे पहले तो हमें डेटा को क्लीन करना पड़ेगा ठीक है सो पहले हम सिंगल कॉलम को क्लीन करेंगे एंड देन we will make automation tool which will clean all this data in one go. So let's clean this revenue column first. So I will just take this column and paste it over there. So अभी हमें इस कॉलम में रिप्लेस करना है क्या रिप्लेस करना है स्ट्रिंग वैल्यूज को अभी जो स्ट्रिंग वैल्यूज है इसको रिप्लेस करना है इससे ठीक है सो जो वैल्यूज हमारे पास है वो है डॉलर साइन सेकेंड वी हैव कॉमा इन दो चीजों को आपको रिप्लेस करना है एंड वी विल यूज रीड मोड to access this data. Replace किसके साथ करना है? Nothing. Don't want to replace with anything. Then regex एक पैरामीटर है जो आप यूज करोगे. Regex is equal to 2. Done. And last thing I want this data as a float so that I can do numerical calculation. So as a type करेंगे इसको float. Now as soon as I run this code and if I will show you what it actually does. सो आपको दिखेगा कि जो आपका कॉलम पहले जहाँ पे डॉलर साइन थे या फिर जहाँ पे कॉमा था वो अभी सभी का सभी निकल चुका है एंड नाउ इफ यू ट्राई दैट सेम कोड विच इज सम यू विल गेट एक्चुअल न्यूमेरिकल वैल्यू ठीक है अभी इसके साथ आप कुछ भी कर सकते हो सो एग्जाम्पल लेट्स से आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज एवरेज रेवेन्यू सो एनपी डॉट मीन ऑफ दिस वैल्यू
So if I copy and paste, this is average revenue. If I want to know standard deviation, let's calculate that also. So NPA dot standard deviation of the revenue. See, जैसे ही आपका डेटा क्लीन हुआ, आपका जो भी ग्राफ्स है या फिर जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज है, दे आर नाउ स्टार्ट वर्किंग. नाउ लेट्स टेक दिस ग्राफ फॉर एग्जांपल. जैसे अभी ये पहले नहीं चल रहा था. सो प्रैक्टिकली ग्राफ कैसे दिखेगा? देयर यू गो. दिस इज हाउ योर ग्राफ शुड लुक लाइक. अभी आप इसको जैसे चाहिए वैसे बना सकते हो. सो फॉर एग्जांपल यू हैव समथिंग विच वी कॉल एज बीन साइज. सो हम बीन साइज को डिसाइड कर सकते हैं. एंड आई वांट 6 पिन्स ओनली. वेरी गुड. सो आपको पता चल रहा है कि ऑलमोस्ट जो आपके पास 500 कंपनी है उसमें से 400 से भी ज्यादा कंपनी इस रेवेन्यू के ऊपर अफेक्ट कर रहे हैं. ठीक है. और अगर आपने पहले ये किया होता बिफोर क्लीनिंग योर डेटा, सी देयर इज नथिंग, राइट? सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा क्लीनिंग. नाउ लेट्स टेक एग्जांपल. सो अभी आप जब एक कंपनी में काम करोगे तो आप ऐसे मैन्युअली हर एक कोड को नहीं लिख सकते, राइट? सो यू हैव टू मेक श्योर वट एवर कोड इज देयर इट इज ऑटोमेटेड. So let's do automation. Let's create one code which will automatically clean all the data. So for that, what we are going to do, we are going to use or we are going to create one function which will take every column, will check whether there are problems and will clean that data. So let's see. Let's create one function. So function name, let's call it as data clean. Now in data clean, we will need two things. Firstly, the data. And second, which we need is the columns on which we want to run this function. अभी हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स हैं. सो वी आर गोइंग टू यूज वन लूप जहाँ पे हम कहेंगे फॉर कॉलम इन कॉलम्स. सो वन बाय वन एक कॉलम को हम इटरेट करेंगे, उसको क्लीन करेंगे. अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम ऐसा है कि इन कॉलम्स में कहीं पे एक डैश वैल्यू है जो आपका इस कोड को इंटरप्ट करेगा. सो वी हैव टू हैंडल दैट डैश वैल्यू ऑल्सो. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू चेक columns and if there are any dash values. So column dot replace and replace function में हम dash value को replace करेंगे with nn so that our code will not interrupt. Now एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. सेकेंड प्रॉब्लम है अभी यहाँ पे जितने भी सिंबल्स है उन सिंबल्स को हमें क्लीन करना है. सो आई विल सिंपली कॉपी दिस कोड, like paste it, and let's make some changes. So second thing which we are going to do, we are going to handle all the symbols. So अभी symbols कितने भी हो सकते हैं. So we are going to use forward slash for that, dollar sign, then comma, then percentage. So जितने भी symbols हैं उन सभी symbols को हम replace करेंगे. Replace किससे करना है? Nothing. You don't have to replace with anything. And then we are going to use regex parameter, make it true, and going to cast as a type. अभी जब आप इस फंक्शन को रिटर्न करोगे, ठीक है, अभी यहाँ पे क्या होगा कि आप जो डेटा को भेजोगे वो वन बाय वन चेक होगा और अगर उसमें कौन से भी सिंबल्स है जो इन सिंबल्स को मैच कर रहे हैं तो वो सभी के सभी क्लीन हो जाएंगे. नाउ लेट मी शो यू एग्जांपल. सो सबसे पहले डेटा को देखो. अभी डेटा में हमारे पास ये जो कोड हमने लिखा है वो स्पेसिफिकली हमने न्यूमेरिकल डेटा के लिए लिखा है. ठीक है, विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज टिल मार्केट वैल्यू. सो सबसे पहले हमें उसको लाना पड़ेगा. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू यूज आईलॉग फंक्शन फॉर दैट. मुझे सभी के सभी रोज चाहिए एंड फ्रॉम सेकेंड कॉलम टू लास्ट कॉलम. वेरी गुड. सो अभी हमने क्या किया, जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज थे वहां से लेके मार्केट वैल्यू तक सभी डेटा को सेपरेट कर लिया. अभी इस वाले डेटा को हमें देना है हमारे फंक्शन को. सो वी विल कॉल आवर फंक्शन विच इज डेटा क्लीन एंड इसमें हम अपना डेटा फ्रेम देंगे, उसके साथ साथ इस डेटा को पास करेंगे. एंड एज सुन एज आई रन दिस कोड, there you go, matching. Now everything was there, like percentage, then your dollar sign, then commas, everything is clean in single code, right? And that's why you need to know how you can use, how you can build the logical functions which will help you to clean your data. Now let me show you the best part about that. So once you have the data clean, you can work on that data however you want. So let's take one challenge. So I want to find out मेरे पास कितनी कंपनीज हैं जिनका प्रॉफिट चेंज नेगेटिव है. ठीक है, सो इसके लिए हम सबसे पहले प्रॉफिट चेंज कॉलम को लेंगे. ठीक, एंड प्रॉफिट चेंज नेगेटिव है मतलब लेस देन 0 है. नाउ इट्स वर्किंग. सो अगर यही कोड में आपको ऊपर दिखा तो आपको टाइप एरर आया था. सी यू हैव टाइप एरर. ये कोड आपका अभी यहाँ पे चल रहा है.
बट सर हमें ट्रू एंड फॉल्स में आंसर नहीं चाहिए, आई वांट हाउ मेनी कंपनीज आर देयर। सो यस, लेट्स सी। ये हमने डेटा फ्रेम को फिल्टर किया, बोला यू हैव द आंसर, राइट। कितने कंपनीज हैं, लेट्स चेक क्विकली। सो वी हैव 201 companies. So out of 500 companies, you have 201 companies whose profit changes negative. मुझे ये आंसर परसेंटेज में चाहिए, राइट। चल, सो डिवाइड डेटा फ्रेम डॉट शेप ऑफ 0 and let's multiply by 100 to make it in percentage. So almost out of 500 companies, 40 companies are there whose profit change is in negative. ठीक है। सो अभी एनालिसिस करने के लिए यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सो यू कैन सी कि प्रॉफिट वर्सेस रेवेन्यू चेंज कैसे हो रहा है, प्रॉफिट्स कैसे वर्क कर रहे हैं, कौन से नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कहाँ पे ज़्यादा है, एवरेज क्या है। सो अभी आपके पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस है, लेकिन ये ऑप्शंस कब है, जब आपका डेटा पूरी तरीके से क्लीन हो गया। ठीक है। So in this course, we are going to focus on exact that part, not on the cleaning. Yes, cleaning is important. We are going to work with the data where we are going to clean data in practical way. We are going to do automations, but we are also going to work on the different domain, going to see how we can practically analyze e-commerce, healthcare sector, insurance sector, finance sector. Along with that, there are particular core analysis. लाइक अगर आप फाइनेंस में वर्क कर रहे हो तो फाइनेंशियल एनालिसिस कैसे होता है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे होता है, रिस्क एनालिसिस आप कैसे कर सकते हो। अगर आप नेटफ्लिक्स करके डेटा के ऊपर काम कर रहे हो या फिर ई कॉमर्स सेक्टर के ऊपर काम कर रहे हो तो चर्न एनालिसिस क्या होता है। ठीक है। सो टूल्स तो हम सभी कवर करेंगे एंड वो हमें सीखने भी है, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि जो आप सीख रहे हो उसको आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर पाओ। अगर आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन सीखना है देन जॉइन दिस बैचेस। ठीक है। चलो, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। होपफुली आपको ये डेमोन्स्ट्रेशन पसंद आया होगा। इफ यू नीड एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आवर साइड, प्लीज कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर्स। थैंक यू।